Bismillahirrahmanirrahim. This is the next lecture after functional groups, because in the last lecture we just studied about the functional groups, and now we need to go one by one to understand all these functional groups. Now the topic for this lecture, I would like to say that it's the technical information about some important functional groups which we deal in the organic chemistry. So in the first thing is the alkanes. Okay, so the one, two or three things you need to remember about every functional group. Now the functional groups, when the specific functional groups are present, they give the class of the compounds. So the first class is the alkanes. The first class is the alkanes. So if we go for the name, anes means compounds which contain single bond, and every time their geometry is tetrahedral electron geometry. Okay, so this could be the structure. These are the examples. This is the example of propane expanded structure, propane condensed structure, and this is the propane bond line structure. Now, if we talk about the second point is hybridization. So alkanes means all single bond. So when all single bonds are there, the hybridization is the sp3. Now, the last thing is that this single bond can easily rotate like this. Okay, so the rotation is from 0 degree to 360. ठीक है, पूरा सर्कल जो है ये घूम जाता है, right? So that's why we can say that there are number of isomers for alkanes. इसको हम differently study करेंगे when we study the conformational analysis. Next is cycloalkanes. अच्छा, एक चीज रह गई आपकी alkanes की कि इनका जो general formula है that is CN, okay, H2N plus 2. So this is the general formula. For example, if the value of N is C7, okay, so how many H will be there? So 2N कर दें आप इसको तो ये 14 हो जाएंगे, प्लस इसमें 2 कर लेंगे तो that is 16. That is how you are going to calculate the number of carbons and their hydrogens. Next we come to the cycloalkane. Okay, cycloalkane का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज CnH2n, यानी कि जितनी कार्बन्स उसे डबल हाइड्रोजन. So this is the formula of cycloalkanes. What is the new in cycloalkanes? The structures are in the cyclic form, and this starts from propane. All the bonds are single, sp3 hybridization, ठीक है, and tetrahedral structure. Rest of the things are the same, but only the difference is in the cyclic structure. Number one difference, and when something cyclizes, it cyclizes at the cost of 2 hydrogens. So that's why in cycloalkanes 2 hydrogens are less. This is the expanded structure, this is the line structure. They can be the whole structure, they can be the substituent also. Is that okay? Move to next thing. Now, if one of the hydrogen is replaced by halogen, the class is called alkyl halides. तो important bond, important क्या है इसमें bonding? CX की bonding जो है that is very important. CX में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं, right? So ये इसका जो है वो difference है. So that's why this class is called alkyl halides. Next we come to alkenes. Now you can see the sound. Ene. Ene is a sound for double CC double bond, carbon carbon double bond.
Now this carbon-carbon double bond is a composition. It has a composition, and it is, which means that there is one sigma bond, ठीक है, और sigma bond हमेशा line of axis में जो है वो overlapping से बनता है. तो ये जो आपका sigma bond जो है, जो बनेगा from p orbital of one carbon and p orbital, this is carbon, okay, and this is another carbon. So in इसका जो p orbital है और इसका जो p orbital है, they straight axis पे overlap करेंगे. A bond is formed which is called sigma bond. ठीक है. अब इसी कार्बन का एक unhybridized p orbital है, इसी कार्बन का एक unhybridized and again one unhybridized, ठीक है, p orbital. They will go for the sideways overlapping above and below the axis, जिसकी वजह से जो resulting bond है that is called pi bond. ठीक है. Number one चीज. Number two, when double bond is present, two things are obvious. Number one, trigonal planar geometry and sp2 hybridization. ठीक है. So this is the structure. ठीक है. At least one double bond must be there in order to be in the class which is known as alkene. So this is the line structure. Now the rotation of double bond is very restricted. ठीक है. इसलिए इसके आइसोमर्स इतने ज्यादा नहीं होते. ठीक है. तो ये इसका स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया है कि हाफ ऑफ द पाई बॉन्ड ऊपर होता है और हाफ नीचे होता है ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ टू कार्बन्स. दूसरी सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्कीन्स, इज कि इनकी जो डबल बॉन्ड की जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है. डबल बॉन्ड्स आर रिजिड एंड कैन नॉट रोटेट फ्रीली लाइक एल्केन्स. So that's why the rotation would cause loss of overlap of the p orbitals and thus sigma bond will be broken down. So इनके जो isomers बनते हैं, they are not numerous indefinite isomers but they are only two isomers. One, ठीक है, one वो होते हैं जैसे कि ये C, जैसे कि ये है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, ओके, राइट, और यहाँ भी मैं CH3 लगा दूं, राइट. तो ये दो अल्काइल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड हैं एंड टू हाइड्रोजन्स ऑन द सेम साइड. सो दिस इज कॉल्ड cis. This isomer is called cis. ठीक है. और if I go for the another option, ठीक है, right. So if this is the CH3 group, okay, CH3 group, and this is the CH3 group. The two alkyl groups, they are on the opposite sides, and two hydrogens, they are on the opposite side. So this is called trans. ठीक है. So this isomer is known as trans. So alkenes, they have two types of isomers. One is known as cis isomer, another is known as trans isomers, and together collectively they are known as geometrical isomers. Geometrical isomers. Very simple. Is that clear? So next, the class is alkynes. Again, three things are important. If you focus to the sound, it's the ine. Ine is the sound for triple bond, carbon-carbon triple bond. Now here two sigma bonds are present, two pi bonds are present and one sigma bond. And when this triple bond is there, hybridization is sp और structure जो है वो linear structure. Is it simple, right? Next, we go to aromatics. तो aromatics में हमारा ये planar structure होता है. ठीक है. With alternative double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, single bond. So total there are three covalent bonds, single, and three they are double bonds. इसका structure is always trigonal planar.
और कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2y क्योंकि डबल बॉन्ड्स हैं, और बेंजीन रिंग जिसको हम 6 मेंबर्ड रिंग कहते हैं, दिस इज द 6 मेंबर्ड रिंग विद अल्टरनेटिव 3 डबल बॉन्ड्स, इसे कहते हैं बेंजीन, और टुगेदर इसको हम कहते हैं एरोमेटिक्स. तो बेंजीन रिंग इज अ वेरी कॉमन एरोमेटिक रिंग. So what's the difference in aromatic ring and benzene? Aromatic ring is something which obeys the 2 pi electrons. ठीक है. What is aromatic ring? Aromatic ring is a ring which obeys 2 pi Huckel rule. Huckel rule, right? So next, alcohols. Again you can see now the carbon hydroxyl group is there. ठीक है. और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि alcohols have high boiling points due to the presence of hydrogen bondings. Alcohols जो हैं they behave as acid and base and sometimes amphoteric, यानी कि some acids as well as bases. So this is the structure. Okay, so here one of the hydrogen is replaced by this class. Okay, this functional site OH. So that's why the entire class is known as alcohols. Ethers में linkage है COC. ठीक है. कार्बन की जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स हैं. ठीक है. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन, तो टेट्राहेड्रल से डिस्टॉर्ट होके द ज्योमेट्री विल बी बेंट structure. This is one R and this is another R. R is meant by alkyl group which can be one carbon and more than one carbon. So ये ethyl है, इधर भी ethyl है, so 2 R's हैं यहाँ पे, same है. So I have written like this. और अगर ये 2 R's different होते तो एक को हम ऐसे लिख देते, which shows that the 2 R's are different. नेक्स्ट है अमीन्स. अगेन कार्बन के साथ ये बॉन्ड है. ठीक है. आर भी हो सकता है और आर डैश भी हो सकता है, हाइड्रोजन्स भी हो सकती हैं, कार्बन भी हो सकती हैं. याद रखिएगा कि NH2 ग्रुप जो है वो अगर आपका एक कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इट्स द प्राइमरी अमीन. अगर NH आपका 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, इट्स द सेकेंडरी अमीन. And if आपका जो N है वो 3 कार्बन्स के साथ attached है, then it will be the tertiary amines. Common organic bases हैं और नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उसकी वजह से they act as nucleophile in so many of the reactions. These are the structures. Now here you can see that one, ये आपके पास RNH group लग गया आके. Let me show you again. ये आपके पास जो है ग्रुप आके लगा है प्राइमरी अमीन का. ठीक है. इज दैट ओके? तो ये आपके प्राइमरी अमीन. नेक्स्ट एल्डिहाइड्स. एल्डिहाइड्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज CO. इफ H इज देयर, एल्डिहाइड्स. ये आपका एक बॉन्ड जो है वो होता है यहाँ पे. फॉर एग्जांपल दिस इज द कार्बोनाइल कार्बन. Okay, this is the carbonyl carbon and this is 4 valencies complete हो गई कार्बन की. So if one of the line is specifically we write hydrogen over here, then it is aldehydes. ठीक है. और aldehydes में जो carbonyl carbon होती है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पे होती है. ट्रिगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और इन दोनों की जो आपस में हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp2. आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड है. सिमिलरली अब कीटोन्स पे आ जाएं तो यही हमने स्ट्रक्चर पीछे ड्रॉ किया था. अगर आप देखें कि सेंटर में कार्बन है, ये ऑक्सीजन है. सो 2 लाइंस मैंने रहने दी. 2 लाइंस का मतलब है 2 कार्बन. 2 कार्बन मीन्स 2 R ग्रुप, विच कैन बी सेम, विच कैन बी डिफरेंट.
there is no hydrogen. So this is the ketones. Again, they have the trigonal planar geometry, sp2 hybridization. And aldehydes and ketones, they are very, important organic classes. And aldehydes are more reactive than ketones due to the presence of one single hydrogen. Then we come to carboxylic acids. So carboxylic acids कैसे बनते हैं? Let's start with like this. Okay. So one of this is now OH, right? ये आपने OH कर दिया. Again, इनके melting points, boiling points are very high due to the presence of hydrogen bonding. Trigonal planar structure है और कार्बन और ऑक्सीजन की जो hybridization है, that is sp2. Then we come to ethers. Ethers जो हैं उनमें linkage आ जाती है यही carbonyl carbon से we can move further. Okay, so यहाँ पे आ जाएगा O और हाइड्रोजन की जगह I will write R. यानी कि ऑक्सीजन एक और कार्बन के साथ. So you can see this ether linkage right like this. This is CO, this is O, and this entire structure can be represented as a R. Okay, so this is the trigonal planar, and again as carbon and hydrogen, they are sp2 hybridized. Then we come to amides. ठीक है, amides में again let's move with this carbonyl carbon. इसमें आपने N, ठीक है, और आपने R2 लगाए हैं. ठीक है, ये NH2 भी हो सकता है और दो हाइड्रोजन्स को I have replaced by R2. So ये स्ट्रक्चर आप इधर देख रहे हैं. ठीक है, ये NH, ठीक है, और दूसरी कार्बन है जिसकी की वैल्यू ये है. So again CO double bond sp2 hybridized और trigonal planar structure है and so on. Again we go to the nitriles. ठीक है, nitriles में ये सिस्टम होता है. C is triple bonded to nitrogen linear. अब जब ट्रिपल बॉन्ड आ गया है sp3 hybridization linear structure. ठीक है, so these are called nitriles. So this is all about today's lecture which I have given in the class. I hope you understood it clearly, and remember that every Monday at 6 p.m. you are going to have your quizzes. Thank you so much.